Today I have to discuss on reaction intermediate. Already I said that how many reaction intermediates are there, and reaction intermediates are very much important in point of view, not only for PGT chemistry but also other exam like CSINET and so on, because there must be, we have to know the concept. Okay, because many more reaction and many more steps which are basically based on the stability of reaction intermediate. Okay, so mostly we have to study already, that is radical. Okay, so today I have to discuss on carbonium ion, or what we say that is carbocation. Okay, next I will start with carbon ion, and then gradually, that is continuously, I have to say about nitrogen, benzene intermediate, carbene, that is singlet carbene and triplet carbene, and along with finally that is sigma complex and pi complex. Okay, so first one, remember that carbonium ion or carbocation, you can say this is a positively charged species. Okay, so this is a positively charged species, you know this. Okay, and there must be the carbon attached with three groups or three bonded groups. Okay, and one p orbital still should be vacant. Okay, there must be this p orbital should be vacant. एक p orbital होता है जो vacant होता है. Okay, clear? So that's why when nucleophile approaches, nucleophile can approach from above the plane as well as below the plane. There must be two way. Okay, so that's why mostly when the reaction going on the basis of carbocation intermediate, there must be two type of products can be produced. If one is and mostly if these two products are optically active, so on that case we have to say that is this is the nothing but that is a racemic mixture. Racemic mixture, that is nothing but there should be a two type of optically active substances is there. If one is R, other should be S. Okay, तो जो आपका SN1 टाइप रिएक्शन होता है वहाँ पर आपका कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है? कार्बोकैटायन मतलब होता है जहाँ पर कार्बन इज शुड बी बॉन्डेड विथ थ्री डिफाइंड एटम्स और थ्री डिफाइंड ग्रुप्स और थ्री मे बी हाइड्रोजन. सो कार्बन का तीनों बॉन्ड किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ रहता है, पर एक p ऑर्बिटल वैकेंट रहता है. देयर शुड बी वन p ऑर्बिटल शुड बी वैकेंट. Okay, so when the approaching ligand or approaching nucleophile is there, it can be attack on the above the plane as well as below the plane. So there must be two way is there. Okay, so that's why two type of product can be produced. If one is optically active, so obviously the another product which are produced by defined way, that should be also optically active. So on that case we get R as well as S. So on that, these two mixture of two defined optically active compounds, but they are not a defined, they are isomeric in nature, but they are mostly enantiomer. Okay, so on that case we have to say this is the nothing but racemic mixture. Okay, but there are always, remember, exceptions are always there. There must be many special cases are also there, so we have to count all of this. Okay, clear? Okay, next. Remember that this is this carbocation. This is we mostly I think say that is this is a classical carbocation. Or there should be another type of carbocation can be there where 8 electrons already present. Like as for example, if hydrogen sigma bonded to any carbocation, suppose this. So on that case, this carbon, due to sigma bond donation, carbon fulfill its octet. Okay, so this is not a sp2 hybridized, this is a sp3 hybridized. What I say, this carbon is now sp3 hybridized, and this is another type of carbocation. Okay, I think this is said as non-classical.
I will check again which are classical, which are non-classical, but I think this is are non-classical. And what I already said, this is a classical. Okay, but I will check again. Okay, next one. Mostly we have to say, mostly we have to consider the carbocation of first type. This. Okay, where the vacant orbital is there, where nucleophile can approaches in either side of the plane. Okay. So the examples are also there, that is methyl cation, ethyl cation, as well as isopropyl cation. Okay. Here. So this type of carbocation, should be mostly sp2 hybridized. That's why 120 angle is there around carbon atom, and that should be a planar. Okay, that is a planar. Now, how many way the carbocation should be produced? There must be several way are there. First one, direct ionization. When suppose any alkyl bromide, alkyl iodide is there, and there must be, you have to provide silver Ag plus. Okay, so this Ag plus can having the ability to coordinate with halide ion. Okay, आप अगर Ag प्लस या फिर Ag के प्लस के जैसा कोई भी मेटल, ऐसा मेटल दे दो कि जिसके साथ आपका वो हैलाइड आयन का अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, तो क्या करेगा, हैलाइड उस मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा और एल्काइल चेन को छोड़ देगा. कैसे छोड़ देगा? पॉजिटिव कैटायन के साथ साथ छोड़ देगा. ठीक है, तो AgBr एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ क्या हो गया, एक मिथाइल कैटायन भी प्रोड्यूस हो गया. ओके, क्लियर? So that is only depend upon on the how the interaction, how the binding possibility is there in between of halide ion and metal. Okay, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा हैलाइड आयन और मेटल के साथ, उतना हाई पॉसिबिलिटी होगा कैटायन प्रोड्यूस होने का. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, by the addition of acid to multiple bond. Acid when added by the multiple bond, there should be the chance of carbocation can be produced. Like this, there should be H plus can be added, so there must be carbocation is produced. Here also R plus is added, so there must be carbocation can be produced. Okay. Okay. Next one, by the abstraction of an atom or group using protic acid. Okay. So first one, there must be oxygen having the lone pair, you know, and so it can abstract H plus, so OH2 can be eliminated. So ultimately there must be a again carbocation, ethyl cation can be produced, and obviously the neutral molecular water can be released. Similarly, when Cl having lone pair, that should be coded coded with SbCl5. So ultimately there must be SbCl6 can be produced along with carbocation again produced. Okay. Next one, by the decomposition reaction in any molecule, when N2 is there, N2 is highly stable. Okay, isolated N2 is highly stable. So when in the compound N2 is present, that is ultimately unstable. ओके, आपका N2 नॉर्मली स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और दूसरा N2 न्यूट्रल स्टेट में होता है, वो बाहर आ जाता है, वो गैसियस फेस में रहता है. पर कोई मॉलिक्यूल में या कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड में N2 अगर इनकॉर्पोरेट स्टेट में हो तो वो अनस्टेबल होता है. तो N2 का टेंडेंसी होता है कैसे भी करके वो निकल जाए, कैसे भी करके लीव हो जाए. Okay, this is the normal tendency of N2. The nitrogen N2, molecular nitrogen N2, always having the tendency to leave the compound. Okay, so that's why there must be nothing, the special case N2 can be released. So N2 released, so again carbocation can be produced. Okay. Okay. Next one, by the rearrangement of carbocation, there must be always remember in carbocation or carbonium ion, there if this is a short living species, that's why this is called as intermediate. But still
sometimes in the during the reaction they are having the enough time is there, so on that case some rearrangement can be occur, and by this rearrangement the most stable carbocation can be produced. So there should be a driving force of rearrangement is that to attain the stable or stablest, what said, stable carbocation intermediate. Okay, so stable carbocation intermediate, always remember the stability, always remember 3 degrees more stable than 2 degree and 2 degree more stable than 1 degree. Okay, carbocation that is must be 3 degree is more stable than 2 degree and 2 degree more stable than 1 degree. So always remember when 1 degree carbocation is there, if there is enough time is there, so always it try to be convert in itself in 2 degree or 3 degree carbocation. Okay, because 1 degree is less stable. Okay, similarly when 2 degree carbocation is there, if there is any chance to attain to convert it into 3 degree carbocation, so there should be rearrangement can be occur. Okay, clear. So there must be 1 degree carbocation, 1 degree. So that's why this hydrogen can be migrated, and so ultimately there must be 3 degree carbocation can be produced. Along with there must be CH3 migrated, there again also from 1 degree to 3 degree carbocation can be produced. Okay. And always remember there must be migratory aptitude, hydrogen more migrate, then phenyl, then alkyl group, that is alkyl 3 degree alkyl, then 2 degree and then 1 degree alkyl. These are alkyl. So hydrogen first migrated, then phenyl, then 3 degree alkyl, then 2 degree alkyl, then 1 degree alkyl. Okay. So this is a short living species, already I said. Again, there must be, due to this carbocation intermediate, there must be so many reaction can also be happen. Okay. First one, combination with an anion. There must be a isolated carbocation when there, this is a positively charged, so always electron deficient, so always try to bind with electron dense system. And electron dense system, that is obviously anion. ओके, तो एनायन से ज़्यादा अच्छा तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंस सिस्टम नहीं होता है. कोई भी जगह अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो, वो हर वक्त कोशिश करेगा वो किसी भी तरह करके उसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो वो कम करें. ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अगर प्रोड्यूस हो वो ऑब्वियसली वो कोई भी नेगेटिवली स्पीसीज के साथ कॉम्बाइन होने का फुल टेंडेंसी शो करेगा. Okay, because there must be no partial positive negative, there must be complete positive negative charges is there. So obviously there must be a high electron deficiency is there, and always high having that high tendency to bind with electron dense system like anion. Okay, so there must be this Cl minus attack on positively charged, obviously negative to positive arrow is there. Always remember जब भी reaction होगा negative end और negatively charge और lone pair जो भी हो वो negative चीज़ ही positive चीज़ को attack करेगा. Okay, never be reverse. Positive charge species जितना भी electron deficient हो जाए वो react नहीं, वो attack नहीं करेगा, attack करेगा always electron negative species. Okay, so that's it. Next one, elimination of a proton. So there must be a high tendency to neutralize this whole of the system by elimination of proton to produce alkene this way. Okay. Next, to addition to a multiple bond, there must be R group, suppose that should be added to this group, and there must be again carbocation can be produced. Okay. Last one, rearrangement reaction. Some rearrangement reaction can also be followed. That is very popular reactions, that is pinacol-pinacolone rearrangement as well as dinon-phenol rearrangement. These rearrangement can be happen on the basis on carbocation intermediate production and also their respective stability and also migration. ओके, जो आपका पिनाकोल रिएजमेंट हो और डायनोन फिनोल रिएजमेंट हो, ये दोनों रिएजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आपका इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है. क्या कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन वाला.
और वो उसका स्टेबिलिटी और उसके रेस्पेक्ट में कैसे कैसे माइग्रेशन हो रहा है, ग्रुप का बोलो या बॉन्ड का बोलो या कोई भी चीज़ का बोलो, माइग्रेशन हो रहा है, और माइग्रेशन करके लास्ट में जो प्रोडक्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी आपको जानना पड़ेगा। ये दोनों रिएक्शन जब आप जानोगे तब आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कैसे बॉन्ड बॉन्ड क्लीव हो रहा है और कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा, और तीसरा बात आपको याद रखना पड़ेगा माइग्रेशन एप्टीट्यूड। फर्स्ट माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन का, उसके बाद फिनाल, फिनाल के बाद 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल एंड 1 डिग्री एल्काइल, ऐसे ऐसे माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन एप्टीट्यूड आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन, dienophenols reagent, there must be, we provide acidic medium and oxygen having the lone pair, so it can abstract protons, so ultimately this can be produced. There must be again, this bond can be migrated, and there must be oxygen make a single bond like that. Okay, so there must be corresponding carbocation can be produced in that site. Okay, when there must be carbocation can be produced, there must be two chances is there. Maybe methyl can be migrate A, or maybe this is can be B. So there must be two possibility. Either ethyl should be migrated, or maybe there must be methyl should be migrated. Okay, if ethyl migrated, there must be this carbocation stabilized by 3 alpha hydrogen or 3 hyperconjugated structure. Okay, and here if methyl group migrated, there must be 2 alpha hydrogen or 2 hyperconjugated structure. So gradually this A structure due to 3 alpha hydrogen, that is a major one. Okay, and that is a minor one. You can say that is why we take in that site that carbocation, because this carbocation is the ultimate carbocation. After migration, the ultimate carbocation which is more lived. ओके आपको कार्बोकेटन सिर्फ देखना नहीं है, आपको वो भी देखना है कौन सा कार्बोकेटन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो दिस कार्बोकेटन इज मोर लिव, मोर एग्जिस्ट देन द अदर carbocation, because you can see in that carbocation there must be either ethyl or methyl fluently attached with it. Okay, so that is more short living. Okay, but this carbocation is more lived, more exist, so that's why we have to consider this second carbocation stability. Okay, not that. Okay, so that's why here 3 alpha hydrogen, so 3 hyperconjugation effect, so this is a major one, and there must be 2 alpha hydrogen, so that is a minor one. Clear? Okay, next one, pinacolone reagent. पिनाकोल मतलब क्या होता है, 2 OH जब आपका विसिनल में रहता है उसको हम बोलते हैं पिनाकोल, और जब एक OH हो जाता है और दूसरा डबल बॉन्ड O हो जाता है, पिनाकोलोन, उसको हम पिनाकोलोन बोलते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा देख लेना, यहाँ पर फर्स्ट वन OH लोन पेयर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH2 बाहर आ जाएगा, फिर मिथाइल का शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे माइग्रेट करके यहाँ पर कार्बोनिल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ पर आई थिंक पिनाकोलोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फिर भी ठीक है, ये भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, next one we have to see the stability of carbocation. Always remember for stability carbocation, stability of carbocation, that is aromaticity first one. अगर आप कोई भी जगह देखो कि ये जो इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होता है, वाई? यहाँ पर तो आपका +3I है, +3H है,
फिर भी आपका इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ हुकेज रूल, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। आपका अगर एरोमेटिसिटी हो जाए तो एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। ओके, सो एरोमेटिसिटी शुड बी when present in any carbocation that is more stable or most stable. Okay, aromaticity give more stability. Okay, major contribution. Then we have to see plus m, that is resonance, plus resonance. Okay, not a minus, plus r effect, प्लस आर इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। आप उसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो, आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो प्लस एम मतलब प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और प्लस आर दैट इज प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। देन वी हैव टू सी दैट इज देयर मस्ट बी प्लस एच, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, positive hyperconjugation, then positive inductive effect, and then we have to go again from destabilization 10, that is minus I, then minus H, then minus M, then anti-aromaticity. So when in carbocation their anti-aromaticity when present, so this is the most destabilizing. ओके, जब भी आपका कार्बोकैटायन देखोगे, फर्स्ट देखोगे वहाँ पर एरोमेटिसिटी हो तो वो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, उसके बाद रेजोनेंस प्लस आर प्लस एम और देन प्लस एच मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, देन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आपका डिस्टेबलाइज होना शुरू होता है माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम, एंड लास्ट वन मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग इज एंटी एरोमेटिसिटी। ओके, नेक्स्ट वन प्लस आई, that should be stabilize the carbocation. So that's why most stable is 3 degree carbocation, then 2 degree, then 1 degree, then 1 degree, and last one 0 degree, that is CH3 पॉजिटिव। मिथाइल कार्बोकैटायन को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं क्योंकि उसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है। अगर एक कार्बन अटैच हो कोई भी कार्बन के साथ उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, अगर 2 कार्बन अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं 2 डिग्री, एंड 3 कार्बन जब अटैच होता है कोई भी कार्बन के साथ उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। पर मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है वहाँ पर कोई भी और कार्बन नहीं है तो इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, सो दिस इज ए लीस्ट स्टेबिलाइज। नेक्स्ट वन, और भी कुछ चीज़ आपका स्टेबिलाइजेशन देता है, जैसे एलाइल कार्बोकैटायन। तो इसको एलाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेंस इफेक्ट के लिए आपका स्टेबिलिटी पाता है। यहाँ पर 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। Then benzyl carbocation, there are also so many resonance structures there. Due to resonance, carbocation should be stable. Next one, solvent polarity stabilize the carbocation. Obviously, solvent polarity that is stabilize the carbocation. Carbocation itself is a positively charged. Obviously, positively charged species is a polar species. So that's why when the polar media is there, polar media stabilize the carbocation. Last one, classical carbocation contain two center 2 electron bond. Having positive charge does not remain on a single carbon atom but spread over the at least 3 atoms, and those 3 atoms form cyclic cation, thus called beach carbocation. तो बीच कार्बोकैटायन देयर मस्ट बी 3 सेंटर तक जाता है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है जब, तब उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। पर जब भी 3 सेंटर हो जाता है उसको हम क्लासिकल कार्बोकैटायन नहीं बोलते, हम उसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जब बीच हेड में रहता है उसको हम बोलते हैं बीच कार्बोनियम। ओके, so there must be the other examples are also there in the below of the page. ओके, सो देयर मस्ट बी नॉर्बोनिन सिस्टम में कार्बोकैटायन कहाँ पर होने में कैसे कैसे हम देख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे आप देखोगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है जहाँ पर टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। पर आप जब देखोगे कोई भी बीच हेड पोजीशन में कार्बोकैटायन होता है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में नहीं रहता है, वो 3 सेंटर तक चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं तब? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। किसको? बीच हेड कार्बोनियम को। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म होता है एंड थैंक यू। आई प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके।